सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक प्लांट में जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इस फ्लावर में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे ये है सेपल्स एंड दीज आर पेटल्स, दिस इज स्टेमन एंड दिस इज पिस्टिल। Stamens and pistil are the reproductive parts of a flower which contains the germ cells. तो pistil और stamen तो यहाँ पर है reproductive parts. But what about sepal and petals? ये दोनों किस लिए हैं? So petals are the most visually striking part of a flower and they play a crucial role in attracting pollinators such as insects, birds or bats. The color, shape and scent of petals can attract specific pollinators. Petals also protect the reproductive organs of the flower. Sepals are the outermost whole of modified leaves and protect the developing flower bud. They enclose and support the other parts of the flower during development and help prevent damages. Stamen is a male reproductive organ of a flower. It contains of two main parts. One is filament and the second one is anther. तो ये जो dilated part है that is known as anther और ये जो slender stalk जैसे structure है ये है filament. तो इस एंथर को ओपन करके देखते हैं। ओह, so many tiny grain-like structure. These grains are known as pollen grains. Pollen grains contain the male germ cells or sperm cells that is necessary for fertilization. The stamen plays a vital role in the transfer of pollen to the female reproductive organs for successful fertilization. अब जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा? इट मे बी बाय एयर, सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एयर पॉलिनेशन. इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वाटर ऑल्सो. दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन. इट कैन बी डन बाय इंसेक्ट्स ऑल्सो. तो जब इंसेक्ट प्लांट्स के पास आता है तो उसके ऑर्गन्स पे या फिर लेग्स में पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और फिर इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स वहां के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इंटरेक्शन कर लेते हैं. व्हाट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? दिस पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. इट इज टिपिकली लोकेटेड in the center of the flower. It consists of three main parts: the stigma, style and ovary. The dilated part is ovary. The stigma is the receptive surface where pollen grains land and germinate. The style is a slender tube that connects the stigma to the ovary. The ovary contains one or more ovules. Ovules contain germ cells or egg cells. The pistil plays a crucial role in receiving pollen, facilitating fertilization, and developing into a fruit containing seeds after successful fertilization. तो fertilization कैसे होता है? इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लैंड होते हैं और ये पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओवरी से जाके फ्यूज होते हैं. सो आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain that travels through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote is formed. So that means the pollen need to be transferred from stamen to stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is called as self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents. तो क्रॉस पॉलिनेशन में किन एजेंट्स का रोल होगा? विंड का, वाटर का,
या इंसेक्ट्स का और एनिमल्स का. So this fusion of male and female gametic cells give rise to fertilization. So this fusion of female and male germ cell produce zygote. The zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. जब हम एप्पल को कट करते हैं, then you can see some seeds inside the apple. So the fertilized ovule changes into the seed and the ovary becomes the fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off. तो सीड का एक प्लांट में क्या रोल होता है? जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है वो सीड में कन्वर्ट होता है. क्यों? द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड. बट सीड का क्या रोल है? क्यों एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है? बिकॉज द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. So germination process को और better समझने के लिए करते हैं एक activity. Take a few seeds of Bengal gram. Soak these seeds overnight. Now drain the excess water and cover the seeds with a wet cloth and leave them for a day. Make sure that the seeds do not become dry. Now cut open the seeds carefully and observe the different parts. What do you see? So this structure is known as plumule. This is a future shoot and this is radicle. This is future root. Bengal gram is a dicot seed, which means it typically has 2 cotyledons or embryonic leaves. These cotyledons store nutrients for the developing seedlings. The radicle is the first part of the embryo to emerge during germination. It develops into the primary root of the seedling. Plumule is the embryonic shoot that develops into the stem and leaves of the plant. So plumule से फ्यूचर में स्टेम बनता है और लीव्स बनती है, जबकि रेडिकल से फ्यूचर में रूट्स बनती है.